Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Rapid Revision. Today's video is from AS Level Accounting and this particular question is from limited companies. This paper is March 2025. So this is question number 3. A little warning before we start. You might actually like accounting after this video. Inshallah. So this particular question is a question in which you guys have to prepare 40 accounts. Basically, those T accounts are from the equity and reserve section of the statement of financial position. So normally um, we have four things in the equity and reserve section. One is share capital, the other one is share premium, there's a revaluation reserve, there's retained earnings, and in some questions there's general reserve as well. Basically, share premium and revaluation reserves are capital reserves. And in accounting, so basically how do you get share premium is that when you sell shares or issue shares above par value. So par value is the face value or the nominal value of one particular share. So shares today are digitalized. तो आजकल के ज़माने में आपको फिजिकल शेयर्स नहीं दिखते, लेकिन शेयर्स की एक नॉमिनल वैल्यू होती है. नॉमिनल वैल्यू और पार वैल्यू और फेस वैल्यू जो कि शेयर की बेसिक सी वैल्यू होती है. एंड नॉर्मली शेयर्स व्हेन द कंपनी इशूज शेयर्स आफ्टर द कंपनी हैज worked hard and established themselves, they wouldn't sell shares at par value, they would sell shares at a premium. ठीक है, तो par value जो होती है उसके ऊपर यूजुअली इशू कर रही होती है कंपनी शेयर्स. जब वो कंपनी इस्टेब्लिश हो जाती है तो वो par value पे इशू नहीं करती. The question here says the following balances had been extracted from the books of W Limited on 1st January 2024. They've given you share capital, they've given you ordinary shares of 0.5 each एंड शेयर कैपिटल की वैल्यू जो है वो 750,000 है. अगर आप ये देखें, ये जो 0.5 है, ये 0.5 बेसिकली हमारी पार वैल्यू है. इसको हम पार वैल्यू कहते हैं. और हमारी पार वैल्यू से जो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स जो हमने इशू किया हुआ है और जिसकी टोटल वैल्यू हमारे पास है, दैट इज $750,000. So there is an important formula that I always teach my students is how to calculate the number of shares. So number of shares calculate करने के लिए हम एक formula use करते हैं, उसको हम कहते हैं number of shares is equal to number of shares is equal to value of shares, which means total value of shares. So total value of shares, इसको हम divide करते हैं price per share से. Price of one share. So price per share, basically the nominal value of each share. So 750,000 अगर आपकी total value है $750,000, total par value of all the issued shares, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे $0.5 से तो हमारा आंसर आएगा 1500,000. बेसिकली 1.5 मिलियन शेयर्स. सही है, 1.5 मिलियन. 1 मिलियन में 6 जीरोज होते हैं और ये सिंस यू हैव 1 and then you have 6 digits after 1, that means this is 1.5 million number of shares. ठीक है, ये number of shares आ गए आपके पास. तो number of shares निकालने का बेसिकली ये फॉर्मूला है. And then they have given you share premium की वैल्यू 145,000 है, retained earnings की वैल्यू 154,000 है और revaluation reserve हमारे पास 90,000 है. And for this particular question, what I did was that I tried to first make the double entries for all the transactions that are happening during the year ended 31st December 2024. They are saying during the year ended 31st December 2024, the following occurred. The property was revalued at 690,000. Before this date, the property was valued at 800,000. मतलब ये है कि प्रॉपर्टी डी वैल्यू हुई है. सही है, डी वैल्यू मीन्स कि प्रॉपर्टी जो है वो डिप्रीशिएट हुई है वैल्यू में, डी वैल्यू हुई है. अब जब डी वैल्यू होती है तो व्हाट वी डू इज नॉर्मली हम उसकी डबल एंट्रीज कैसे बनाते हैं. जब डी वैल्यू होती है तो प्रॉपर्टी को तो हम क्रेडिट करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली प्रॉपर्टी इज लूजिंग इट्स वैल्यू. सो इट्स लूजिंग इट्स वैल्यू बाय 800,000 माइनस 690,000 ना, तो वो 110,000 से इसकी प्रॉपर्टी जो है वैल्यू कम हो रही है इसकी. तो प्रॉपर्टी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड and we will debit the revaluation reserves account. So revaluation reserve का normally जो balance होता है हर reserve का, so every reserve whether it's a profits reserve or it's a capital reserve,
रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, तो सारे रिजर्व्स और इक्विटी और रिजर्व सेक्शन में जितनी भी आइटम्स होती हैं सबका नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है। रीवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉर्मली अ क्रेडिट, ठीक है, लेकिन अगर जब हम रीवैल्यूएशन रिजर्व को यूज करते हुए वी आर बेसिकली devaluing the property by 110,000 but we have amount of 90,000 in our revaluation reserve, तो वो बेसिकली हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। हो ये रहा है कि ये जो था प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने अपने बुक्स में 800,000 लिखी थी, लेकिन अब हम उसको 690,000 कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी बेसिकली वैल्यूएशन में कम हो रही है। तो ये जो अमाउंट है, एक तो हम प्रॉपर्टी को क्रेडिट कर देंगे, प्रॉपर्टी की अमाउंट कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे प्रॉपर्टी अकाउंट को, लेकिन हमें रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा सो दैट यू नो द अमाउंट इन द रीवैल्यूएशन रिजर्व विल बी यूज टू बेसिकली डी वैल्यू प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे 90,000 हम रीवैल्यूएशन रिजर्व से निकालेंगे and then we will take out some amount from the retained earnings also because revaluation reserve में enough amount नहीं है, तो retained earnings में हम ये हम और 20,000 retained earnings से remove करेंगे, सही है। तो retained earnings account debit, revaluation reserve account debit and property account credit. So basically this is a decrease in the value of property. तो प्रॉपर्टी, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी जब डिक्रीज वैल्यू में डिक्रीज भी हो जाती है, लेकिन जब तक हम एक्चुअली प्रॉपर्टी को बेचेंगे नहीं, वी डोंट रियली नो कि हमने जो है वो डिक्रीज्ड अमाउंट में हाउ मच डिड वी गेट व्हेन वी सोल्ड द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक्चुअली में वैल्यू में बढ़ती भी है, तो जब हम वैल्यू में बढ़ती है तो अब रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होता है। जब वैल्यू में प्रॉपर्टी बढ़ती है तो आप प्रॉपर्टी को डेबिट करते हैं और रीवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए हमें रीवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा, उस अमाउंट को रीवैल्यूएशन रिजर्व से निकालना पड़ेगा, रिटेन अर्निंग से बेसिकली रिमेनिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा एंड क्रेडिट प्रॉपर्टी बाय 110,000। सो अगर हम यहाँ पे देखें, इन्होंने हमें कहा है कि रिटेन अर्निंग्स अकाउंट बनाओ, शेयर कैपिटल अकाउंट बनाओ, शेयर प्रीमियम अकाउंट बनाओ, रिटेन अर्निंग्स अकाउंट बनाओ एंड मेक द रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। सो आई कैन प्रिपेयर माई रिटेन अर्निंग्स अकाउंट एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। तो मैं यहाँ पे बैलेंस से आई विल स्टार्ट विद द बैलेंस ब्रॉट डाउन ना, तो मैं यहाँ लिखूंगी बैलेंस ब्रॉट डाउन। This will be January 1 and I think this is 2024 year, तो मैं यहाँ लिखूंगी January 1 2024 and this is going to be retained earnings account had 154,000 in it, ठीक है। और मैं रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस विल बी क्रेडिट बैलेंस। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन में जितनी भी आइटम्स हैं सबका नॉर्मल बैलेंस इज अ क्रेडिट बैलेंस। रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन and this will be 90,000. Now what did I do? I credited the property account and debited the revaluation reserve account. हाँ, तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगी बेसिकली यहाँ पे। और ये कब हो रही है devalue property? 1st April. So I'm going to write here April 1 and I'm going to write here property and I'm going to write here 90,000. So revaluation reserve loses basically all the value जो कि 90,000 थी, जो हमने सारी खत्म कर दी revaluation reserve account से। And from the retained earnings account, I need to subtract again 20,000. So I'm going to write here April 1. I'm going to write here property. So property इसके against credit हुआ है, retained earnings against property credit हुआ है, क्योंकि property की value कम हुई है, तो मैं यहाँ 20,000 लिख दूंगी in the retained earnings account. उसके बाद हमारे पास ये तो हमने कर लिया, फिर सेकंड वाले की हम एंट्री बनाएं, इसकी पहले डबल एंट्री बनाऊंगी मैं। एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 0.05 पर शेयर वाज पेड। दिस इज द रीजन व्हाई आई कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ शेयर्स, सही है। तो नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कैलकुलेट किए थे 1500,000 मल्टीप्लाइड बाय 0. कितना कह रहे हैं लोग, 0.05। सो इसको 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा हमारा डिविडेंड का अमाउंट कितना है। तो 0.05 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 75,000। दिस इज व्हाट आई हैव पेड इन डिविडेंड्स। जब डिविडेंड पे होता है तो हम करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, बैंक क्रेडिट। बेसिकली ये हमारी डबल एंट्री होती है, क्योंकि बैंक से पैसे वी आर बेसिकली लूजिंग मनी फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट, सो बैंक विल बी क्रेडिटेड, रिटेन अर्निंग्स विल बी डेबिटेड। सो बेसिकली डिविडेंड्स इज गिवन फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स। सो आप लोगों को ये बात पता होगी कि रिटेन अर्निंग्स इज अ पूल इन विच द कंपनी पुट्स ऑल द प्रॉफिट। सही, तो जितना भी हम प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं हम रिटेन अर्निंग्स में जमा कर रहे होते हैं। तो अगर हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो भी हम रिटेन अर्निंग्स से ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे शेयर होल्डर्स को। तो हम यहाँ लिख देंगे बैंक
रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में, एंड आई एम गोइंग टू राइट हियर 75,000. रिटेन अर्निंग्स इज सपोज टू डिक्रीज बिकॉज ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड पे हो रहा है तो रिटेन अर्निंग्स हमारी डिक्रीज होंगी. यहाँ पे हम लिख देंगे June 30. दिस विल बी ऑन June 30 एंड दैट्स इट. रिटेन अर्निंग्स का इफेक्ट हमने शो कर दिया इन द रिटेन अर्निंग्स अकाउंट. सो द डबल एंट्री वाज रिटेन अर्निंग्स डेबिट 75,000, बैंक क्रेडिट 75,000. ठीक है, इसके बाद हम बाकी एंट्रीज भी बनाएंगे. द October 1 transaction, they are saying here October 1, a rights issue of ordinary shares, 2 ordinary shares for every 3 ordinary shares held at this date was made. अच्छा, राइट्स इशू क्या होता है? सो नॉर्मली देयर इज अ शेयर इशू. सही है, शेयर इशू जो है वो आप जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं. सही है, एनीबडी फ्रॉम द पब्लिक कैन परचेज दैट जनरल इशू ऑफ शेयर्स. सही है, जनरल इशू ऑफ शेयर्स जो है वो हम एक प्रीमियम पे ही करते हैं नॉर्मली. जब कंपनी जनरल इशू ऑफ शेयर्स कर रही है तो प्रीमियम पे ही कर रही है लोगों को, जनरल ऑडियंस को. सही है, लेकिन राइट्स इशू में केस में, राइट्स इशू के केस में हम जनरल ऑडियंस को ऑफर नहीं कर रहे शेयर्स, हम अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स ऑफर कर रहे हैं. और राइट्स इशू जो होता है ना, वो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि राइट्स इशू इज लाइक नॉर्मल मार्केट वैल्यू जो चल रही होती है शेयर्स की उससे सस्ते होते हैं, लेकिन पार वैल्यू से ऊपर होते हैं. तो पार वैल्यू से महंगे और नॉर्मल मार्केट वैल्यू से सस्ते क्यों? why are they cheaper from the market value? Because the reason is that market value is a bigger value, right? So why would the shareholder be motivated to purchase these shares? Only in that reason कि अगर हमें सस्ते मिल रहे हो from the market value, जो मार्केट में वैल्यू चल रही है उससे सस्ते मिल रहे हो. अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हम जिनको ऑफर कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट्स ऑफर कर रहे हैं, वो किसी और को, अपने जानने वाले लोगों को ऑफर कर सकते हैं वही राइट्स इशू. जैसे हम राइट्स इशू कर रहे हैं, कंपनी राइट्स इशू कर रही है जनरल शेयर अपने शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में से कोई अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लोगों को ऑफर कर सकता है कि आपको राइट्स इशू, लाइक इफ यू वांट टू परचेज राइट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपनी, आई एम विलिंग टू ऑफर यू. तो इट इज़ पॉसिबल कि आपके पास न्यू शेयर होल्डर्स भी आ जाएं बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स माइट आस्क समवन एल्स. एंड राइट्स में सारे शेयर होल्डर्स को ज़रूरी नहीं है कि वो ले ही लें. ज़रूरी नहीं है कि शेयर होल्डर्स जिनको ऑफर हो रहे हैं राइट्स इशू वो जो है वो ले ही लें. सही है, वो ना लें, उनकी मर्जी है. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है द राइट्स इशू, द शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 0.2 पर शेयर. मतलब 0.5 तो हमने अर्न किया फ्रॉम पार पर शेयर, और 0.2 हमने जो है वो प्रीमियम अर्न किया. ठीक है, 0.2 प्रीमियम है, और पार की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो तो 0.5 पर शेयर मिल ही रही है, और हमने प्रीमियम में 0.2 अर्न किए हैं. तो इसका मतलब बेसिकली 0.2 रेज किए हैं फॉर प्रीमियम. तो इसका मतलब ये है कि हमने हर शेयर $0.7 का बेचा है. 0.7, सही है. राइट्स इशू $0.7 का हुआ है. द राइट्स इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, मतलब ये कि सारे शेयर होल्डर्स ने एक्चुअली ले लिए ये राइट्स जो कि हम इशू कर रहे थे. तो हम अब यहाँ पे I will make a few double entries. Number 1 is bank will be debited with the rights issue. So bank will be debited by 0.7 multiplied by, अच्छा, number of shares कितने होंगे जितने हमने issue किए हैं for rights, 1500,000 multiplied by 2 divided by 3. So if on every 3 shares that the ordinary shareholders already have, they get 2 in rights. तो इसका मतलब ये है कि हम 1 million shares जो हैं वो इशू कर रहे हैं. सो 1,000,000,000. 1,000,000,000 means 1 million. सही है. सो 1 and then 6 zeros. सो 1 billion हम इशू कर रहे हैं. These are the number of rights. नंबर है ये. तो $0.7 आप एक शेयर का ले रहे हैं और आप 1 million शेयर्स इशू कर रहे हैं. तो इसका मतलब हम जो टोटल अमाउंट जो रेज कर रहे हैं राइट्स इशू से वो होगा 700,000. बैंक में जो डेबिट होगा अमाउंट वो 700,000 होगा. एंड हमारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल विल इंक्रीज बाय द पार वैल्यू. सो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा. एंड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? 0.5 जो कि पार वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 1 million. इसका आंसर आएगा 500,000.
and share premium credit hoga by the premium amount. So I'm going to write here share premium. I'm going to write here 0.2 multiplied by 1 million, which will be 200,000. 200,000 से हमारा share premium बढ़ेगा. So if you guys look at the double entry, bank debit, ordinary share capital credit, share premium credit, and since we are making T accounts for all of these, ordinary share capital account जब हम बनाएंगे, we will start with a balance brought down. I'm going to write here balance brought down. On the credit side, 750,000, and this will be January 1, 2024. And then since we have made a rights issue के बाद मेरा share capital बढ़ रहा है और नई share capital is being credited, तो उसके against बैंक के against बढ़ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक, हम यहाँ लिखेंगे 500,000. So bank is being debited, ordinary share capital account is being credited, and this is October 1st, 2024. And then there's no effect on any, like there's no other effect on the ordinary share capital account. तो इसका balance carried down जब calculate करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1250,000. So 1.25 million. And this will be December 31, 2024. 2024 में ये, and then you basically balance this account at 1250000 on both sides, 1250000, and then this balance carried down will become my balance brought down. So I'm going to write here balance brought down, and this will be 1250000, and this will be January 1, 2025. And for the share premium account, I'm going to write balance brought down. So balance brought down, and this share premium account will be credited with the opening balance, which is 145,000. I'm going to write here 145,000, and then I'm going to write here January 1, 2024. And then share premium was credited by 200,000 और इसके against bank debit हो रहा था, तो मैं यहाँ लिखूंगी bank. I'm going to write here 200,000, and this will be October 1 क्योंकि share issue rights issue October 1st को हुआ है. And then when I calculate balance carried down, so I'm going to write here balance carried down. This is going to be 345,000. This is going to be December 31, and then this account balances at 345,000 on both sides. Balance carried down को हम balance brought down बना लेंगे. January 1, 2025. For the retained earnings account, the profit basically is credited to the retained earnings account. तो income statement में से जो profit calculate हो रहा होता है, income statement का new name जो A levels में usually हम आजकल देख रहे हैं in the recent past papers, they are using statement of profit or loss. ठीक है, statement of profit or loss जो है वो आप retained earnings में basically it's going to profit is always going to increase your retained earnings. So profit for the year increases retained earnings. तो इसको हम जो है वो retained earnings के अंदर क्रेडिट कर देंगे. तो retained earnings के अंदर जब हम इसको क्रेडिट करेंगे, what is the profit for the year? 148,000. I'm going to write here statement of profit or loss. Statement of profit or loss 148,000, and this is going to be December 31, 2024. And if you guys look at the retained earnings account, you have दो चीज़ें माइनस हुई हैं. एक तो प्रॉपर्टी की जो डीवैल्यूएशन हुई है वो हमने माइनस की है, और हमने जो डिविडेंड्स पे किए हैं वो रिटेन अर्निंग्स में से बेसिकली माइनस हो रहे होते हैं, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट पे बढ़ता है और डेबिट पे कम होता है. तो अगर हम इसका बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट करें तो ऑन द क्रेडिट साइड यू हैव 154 plus 148,000, which is 302,000 minus 20 minus 75 is going to give you 207,000. This is my balance carried down. I'm going to write here December 31. This is going to total to 302,000. And then this balance carried down will become my balance brought down. So I'm going to write here 207,000. ये मेरा retained earnings at end है. Right here January 1, 2025. This is interesting because यहाँ पर T account बनाने को कहा है. यही चीज़ जो होती है वो हम अपनी
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी कर रहे होते हैं, लाइक प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड कर रहे होते हैं और डिविडेंड्स माइनस कर रहे होते हैं फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स। इसी तरह डी वैल्यूएशन अगर हो रही होती है तो रिटेन अर्निंग्स माइनस होता है। वंस यू हैव यूज्ड अप द रीवैल्यूएशन रिजर्व टू शो द डी वैल्यूएशन, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप रिटेन अर्निंग्स माइनस करते हैं। So yes, this was for 9 marks and I prepared 40 accounts: ordinary share capital, share premium, retained earnings account and revaluation reserve account. And I told you guys one formula, that was how to calculate the number of shares. So number of shares is equal to total value of shares divided by price per share. फिर हमारे पास थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चंस इन द स्टेट टू फीचर्स ऑफ कैपिटल रिजर्व। सो देयर आर टू कैपिटल रिजर्व, एक शेयर प्रीमियम है और दूसरा रीवैल्यूएशन रिजर्व है। अच्छा, कैपिटल रिजर्व क्यों अराइज होते हैं? नंबर वन, दे अराइज फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। एग्जाम्पल, शेयर प्रीमियम अराइजेस फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स अबव पार वैल्यू। ठीक है, पार वैल्यू के ऊपर अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो हमें शेयर प्रीमियम भी रेज करेंगे हम। ठीक है, अच्छा, कैपिटल रिजर्व्स कैन नॉट बी यूज टू पे डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स बिकॉज दैट्स अ रूल। आप शेयर प्रीमियम से डिविडेंड्स नहीं दे सकते शेयर होल्डर्स को। ऑन द अदर हैंड, ये जो, क्योंकि देखो प्रॉफिट से बेसिकली आप डिविडेंड देते हैं एंड प्रॉफिट्स के जो रिजर्व्स हैं दोज आर टू: रिटेन अर्निंग्स, जनरल रिजर्व। ये जो रिटेन अर्निंग्स और जनरल रिजर्व है ये आप बेसिकली उसके लिए यूज करते हैं। रिटेन अर्निंग्स आप डिविडेंड्स पे करने के लिए यूज करते हैं। And one more thing, general reserve, I haven't seen in any question that we've used the general reserve to pay dividends. Never, actually, you don't really use general reserve to pay dividends, but only retained earnings to pay dividends. The next part here says state two differences between a rights issue of shares and an issue of debentures. अच्छा, debentures is a loan stock. आप जो है वो बहुत बड़े लोन को छोटे छोटे लोन्स, लाइक छोटे छोटे अमाउंट्स में डिवाइड करके यू टेक इट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। तो उसमें जनरल पब्लिक जो है वो एक लोन सर्टिफिकेट, whoever is getting, let's say whoever is one loan certificate is for $10, let's say, तो हम जो है वो लोन सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। तो कोई लेट्स से अगर $100 का लोन देना चाह रहा है तो दे विल हैव 10 लोन सर्टिफिकेट्स। तो rights issue of shares raises permanent capital, that is ordinary share capital is permanent capital, you don't need to repay that. That does not have to be repaid. However, debentures is a long-term liability and needs to be repaid at a future date. Debenture holders have to be paid interest whether the company makes a profit or loss, क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट चार्जेस तो पे करने ही करने हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो। However, dividends to ordinary shareholders are discretionary. So, अगर directors announce करते हैं dividend and if they are willing to give a dividend, they give a dividend. If they are not willing to give a dividend, if there are not enough profit अगर इतना enough नहीं है तो वो ना भी दें डिविडेंड। ordinary shareholders know that like whenever ordinary shareholders actually invest into ordinary shares, वो फिर उनको पता भी होती है ये बात कि अगर प्रॉफिट नहीं होंगे तो वो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी and they can't do anything about it really. नहीं है डिविडेंड तो नहीं है। So that's it for this question. This question was for 15 marks. I hope this helps you guys. Thank you so much for watching.